Hello, good evening everyone. First of all, I would like to thank Dr. Safal, Dr. Shoaib, and Shabana ma'am for coming over here. And these are all role models for all our children in their own way. Shabana ma'am is a role model for all parents, how to make their children as achievers. Dr. Safal and Dr. Shoaib themselves are successful people in their own fields, and we should all follow their advice to the maximum limit that is possible. We heard a lot of interesting things from all of them, but as Dr. Shoaib was saying, ये हम लोग जो सुन रहे जो पढ़ रहे हैं ये सारी चीजों से हमारे को इंफॉर्मेशन आ रहा नॉलेज जब भी बनेगी चीज जब जो चीजों को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसको एक वे ऑफ लाइफ में हमारे लेके आने वाले हैं थिंग्स हैव टू चेंज in our lives. That is the bottom line. And I mean, no matter how much people are speaking about the effects, the bad effects of social media and screen time, unfortunately, it is not decreasing. And as Dr. Sir was saying, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि what our kids usually do, our kids generally imitate the people they are exposed to. They are exposed to good character people in their homes, their grandparents, their parents, their elder siblings, and other people around them in the society who are good people by nature and they have a good way of life. Your children are going to learn good habits. If you are going to leave your children with social media, where their role models are those kind of people about whose character you don't know, then whether you like it or not, those characteristics that you despise that your children should have, they will catch all those things from social media. So it is very important. I heard people say that I mean you can't get away with screen time in today's life. So there is no point in talking about कि भाई screen time आपको नहीं करना है. Screen time तो करना रहने वाला है. It's going to be part of our lives in the coming future. But आपको ये करना है कि आपको किस चीज देखकर क्या चीज आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर as parents. If you are going to be watching things for entertainment purposes और आजकल जो रील्स आ गए हैं तो just for entertainment, just watching those short reels which are pretty much pointless. उसमें ना तो कोई मैसेज मिलेगा ना तो कोई उससे आके कोई थिंकिंग में चेंज आने वाली है लेकिन but just for the passing time people are caught in the habit of just clicking reels. बस सेकंड के रील्स आ रहे हैं देखते जा रहे हैं और एक एक अजीब अजीब किस्म की चीजें उसके ऊपर आते जा रहे हैं. You just don't know what is coming on the screen and it's in this instant. So you have to ensure that your children or your children see what you are watching on your screens. That is extremely important. And when your children are on those screens, which we cannot say that it's going to be absolutely zero, but you have to ensure that you are supervising it. एटलीस्ट इससे तो आप लोग बच नहीं सकते. आप खाना बनाने के टाइम पे बच्चों को फोन दे रहे ठीक है एक तरफ से मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ बट आप एटलीस्ट ये तो इंश्योर कीजिए कि वो एक सेकंड में बच्चा क्या देख रहा है स्क्रीन के ऊपर वॉचिंग. अगर हम मॉनिटर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दे नोवेयर एल्स टू गो. वी ऑल चिल्ड्रन आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय इट. ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट आजकल एक रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है अबाउट द ब्लू लाइट एक्सपोजर. आपको जो पता है मोस्टली हमारे फोन्स के अंदर ये ब्लू लाइट ज्यादा है. सो देयर इज अ स्टडी और आप लोग गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं
that there are many international medical universities which are researching this aspect. Okay, the effect of brain on your prefrontal cortex. Prefrontal cortex is the area right behind your forehead, and this is the most developed part of the human brain. Basically, this is the area which makes humans human. तो जैसा कि आपको पता है, इंसान इंसान की सबसे बड़ी एक जो एबिलिटी है, सामने एक चीज को देखना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके बाद में एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना कि ये मैं करूं या नहीं करूं. और बेसिकली ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज द प्लेस वेयर योर डिसीजंस आर मेड. ठीक है, और स्पेशली अर्निंग एंड डिजायर, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करने, ऑल वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ अर्निंग एंड डिजायर. वो डिजायर को लो करने का जो सेंटर है, दैट इज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. तो वेरी इंपॉर्टेंट इज ब्लू लाइट एक्सपोजर. द ब्लू लाइट स्क्रीन से डायरेक्टली हम वी आर ऑलवेज एक्सपोज्ड टू इट, दैट इज अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टू वर्क. अभी मुझे